Today we are doing Codeforces contest. Too many tabs, right? But okay. So first let's solve B. No, sorry, A. Let's start with first problem. That's a simple problem. You have been given t number of test cases, n length of the array, and then basically an array, n elements of the array you have been given. Output the minimum number of operations that are required to make this array good. So when the array is good when the elements of all the array the elements of the sum of the elements of the array is even, right? So for example, array is good if sum of the elements is even, right? Simple. But for example, if you have been given an array, the sum can be even or it can be odd. If it's even, then the number of operation will be zero. You don't require any operation, right? But if the sum is not even, if the sum is odd, then you need to do some operations to make the sum even. How you'll make that? You can either make one even element into an odd element, or you can make one odd element into an even element. So what I did that, you have to basically change parity of one number. But what is it? What is does it take to change the parity of one number? So let's say example, if you have been given this array, right? If you have been given this array, what would you do? What will you do? Yeah. um how can I say? um Let me just show you how will you do that. For example, if you have been given a t number of test cases, you'll input that, and you have been given n int n, and then you will just input your n, and then int a of n, and then for int I is equal to 0, I less than n I plus plus, you will just take c in a of I. And now the thing is, what does it take to change the parity of a number? You just want to change parity of one number. Single number parity is enough, right? To make it good, just if the number is odd, right? If the number is odd, what does it take, right? While the number is odd, you will do just increment the c, right? You'll just increment the c, and you'll do a of I divided by 2, because that is what the operation. Okay, I think I have not shown you that the operations means dividing the element by 2 and taking the floor of that, which is obviously like integer division does that only, right? So now you'll do m is equal to minimum of m comma c. Otherwise, if the number is even, okay, you'll again make this. Let's take the c upwards, right? Now while this number is even, you are gonna do c plus plus, and you are gonna do a of I divided by equal to 2. That's simple, right? That's simple, right? And let's take this m down, and int m starts from 1e9. At last you need to print that number, right? It's as simple as that. 1214. Okay, 0214. What is this? 0. Okay, you forgot the thing. First let's take sum also, right? Int sm is equal to 0, sm plus equal to of I. Now if your sm modulus 2 is equal to 0, see out just nothing, 0, and else you have to do operations, else you have to do this stuff. I'm not saying one operation is enough. I'm saying just changing the parity of one number is enough. For example, if you make even to odd, the parity changed. Otherwise, the parity changed, right? This is something like that. Okay, that's all about it. Yeah, that's all about it.
You can say 0214, 0214. That's about it. Let's sum this again. Okay, yeah, I'll not summarize this, but I can, show you the summation of it because contest is actually running, so that will, you know, whew. So, where is this summation? Pretest passed. So, this was the code. Like, first I take the input, I check the sum is even, then 0 0, else m is equal to infinity, and then for every number, for every index, you check what is the parity, what is the actually C is the what is the operations you need to change the parity. If the number is this, you change the parity in this many operation, otherwise you change parity this many, and m is equal to minimum. Basically, you need to just change the parity of a number, right? And then let's move to B. This B actually took a lot of time, right? Um, was it that? Actually, no, because first of all, I saw how I do, like I saw that T is the number of test cases, N is the length of the array. Then you have been given array and elements, and then you need to return the minimum number of operations. You need to return the number of operations, and then you print each operation. ठीक है, फिर and then I go to, okay, what is the operation? Okay, the operation is something like this array. You have to change this array. Okay, and then I saw, okay, you need to do the minimize the number of operation. ठीक है, you do not need to minimize the number of operations. So what I did like one solution which is basically, they are saying two things. You do not need to minimize the operation. So can you take infinite number of operation? No, actually this is not something like that. Oh, okay, yes, I get. You cannot take any number of operations, but you know what you can do. But there is also constraint that you can take at most 10 operations. So first solution which I did was actually just good. So was a solution. Obviously there are multiple solutions, they are also saying there are multiple operations, but that was not satisfying this constraint that there has to be almost at most n operations. I was going like beyond that, so much beyond that. But then now if I talk about just straight away solution, so that your this constraint is also satisfied and the question is also solved. So what you have to do, the approach is something like this. You have been given array. Okay, so first of all, what is the good array? You have to make this good, or you have to yeah, you have to make this good, and you have to tell the number of operations required to make this good, and then you have to tell those operations. Like this is the number of operation for, and these are the operation for one index. This is two. So basically a good array is when you have all the elements. Like for example, there are, this is a good array. You pick any two indexes. Now you choose like what is the value of these indexes, okay, max and min. Then that should be divisible. So basically the whole array should have a common gcd. For example, you choose any two elements. If you divide not common gcd, but if you divide any two element, then they should be divisible, right? One is a max element and one is min element, so that should be divisible. But the thing about this is key, okay, what I did, I make every element equal. So operation basically इसमें operation main है कि every at any index you can go and then you can add something, ठीक है? What is the value that you can add? You can add x that is belonging to 0 to a my ai. So you can add any value between this, and then ai is equal to ai plus x बन जाएगा वो. You added this, so you can increment any value, any index value you can increment up to unlimited. Okay, you can increment unlimited, but there is a constraint that you can do at most n operations. That means this also suggests that any index just need to be uh, updated just once. You just need to increment it once and it will be good, right? This is possible, and that's the whole solution. But before that, this condition, yeah, this is always satisfied. The second condition is just basically operation is just at any index you can go and you can increment it by what value, by its current value, like something like that. You can make it like 2x at max. You can make it 2x, or minimum, though it's a, obviously you cannot decrement that. So for example, this 2, you will go to this 2 and you will increment this 2 to like like they say, like they are creating, first of all they are making the whole array 5. So for 2, it has to be 3. So 2, the yeah, you have to add 3 to make it 5. But you cannot add 3 just one operation. You just require two operation to add 3, because first operation 2 will be incremented by 2, and then in the second operation you increment it by 1. So then it is like basically 3. Okay, 2 plus 3 will become.
and 3 you can just increment it in one operation by 2, so it will be 3 plus 2. 5 and 5 you don't need to increment. Yeah, yeah. And in this you don't need to do any operation, because this is satisfying that criteria, that first element is basically, a smaller element is divisible by the larger, dividing by the large element. तो अब approach पे आ जाते हैं. First of all, the approach is to sort the elements, ठीक है. Where is my, what we'll do, some we don't need, we have array, we took the input. Now we took another array, just like that. Let's name it B, and C in B, no need of sum. So approach is gonna be like, you will sort this array first. So 2355 become 2355. Okay, this is already sorted. Now what I am gonna do is that, you will see that the constraint is satisfied, that at most n operation is ready. 2 ko we leave it as it is, like 2. Now 3 ko we will make it multiple of 2. Like first, we will sort this. The good thing about this is that this is already sorted, but when it is not sorted, you have to sort it so that the next element is greater than previous element. That's obvious. Now you have to make the next element multiple of previous element. So whether it can be like similar, or okay, now it's not like similar in this case, like it can be 2 2 na, it could have been 2 2. So then you don't need to do anything, because it is basically multiple of the previous element. But 3 is not a multiple of 2, you make it multiple of 3. How you can increment it by 1 to make it 4. That is a multiple of 2, so you will make it 4. And at every point, at every index, the incrementing you are doing will not take at most, like, the increment is, because you want to make it multiple of this. Even if it's not a multiple of this, you require how many operation, something like it's mod n, right? You will obviously require less than 2 operation to make this 3 or this 5 a multiple of 2. That's obviously, so yeah, that can be obviously done in just one operation, because 3 is obviously greater than 2. You require, incrementation value you require is just less than 2. So in one operation you can make it 4. Yeah, that's obvious, very obvious. Like you don't require any, you don't require a second operation for any index. At every index you can make it the multiple of previous index. By at max you can add like something like 3 to this, it will become 6, but you don't even need that. You just need something like mod of this previous element. The mod of previous element is obviously just 3 mod 2 is just 1, and 2 minus 1 is just yeah, one you require. One is the incrementation that you require, and you will add 1 to this, it will become 4. Similarly, now it is 4. Now 5 को हमें बनाना है multiple of 4. हम इसमें क्या 4 ऐड करेंगे? नहीं, हम इसमें 3 ऐड करेंगे. 3 से ही हमारा काम चल जाएगा, because it will become 8. So yeah, because you want to make this, so for example this is x and this is y. You want to make y a multiple of x, ठीक है? So y is equal to something. अभी y is greater than x, y is greater than x. So either y is already multiple of x, ठीक है? Y is equal to 2x or y is equal to x, ठीक है? Like y is equal to x तो नहीं लेंगे अगर greater है, क्योंकि equal पे तो हमें काम ही नहीं करना, ठीक है? अगर greater है तो हम y में क्या ऐड करें, so that y is equal to something like zx, ठीक है? zx बन जाए तो क्या मॉड्यूलस, जितना y मॉड्यूलस कुछ होगा, y बड़ा है तो y मॉडुलस x कुछ होगा. अगर जीरो हुआ तो फिर छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है? अगर जीरो नहीं हुआ तो 1 2 3 कुछ हुआ. अब ये जो बताओ, जो मॉडुलस a मॉडुलस b होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन b. This is clear, like this is always less than x, obviously. So it is less than y, so that means it can be just done in one operation. So that's what we need to do, and then this over this, and you will make this 8. So यही ऑपरेशन करना है बेसिकली. आप इसको करेंगे कैसे? अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो हमारा ऑर्डर बिगड़ जाएगा, बट वी रिक्वायर दैट ऑर्डर वेयर यू आर डूइंग दिस. तो पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने सॉर्ट करा, हमने देखा हर एक एलिमेंट को अपने प्रीवियस एलिमेंट से मल्टीपल होने में कितने कितने चाहिए, तो 1 3 3 इतना चाहिए से. 3 को 1 चाहिए, 5 को 3 चाहिए, 5 को 3 चाहिए, ठीक है? अब
हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स भी हमें पता ही है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो, मतलब जैसे इंडेक्सिंग अगर यहाँ पे वन इंडेक्सिंग चलती है 1 2 3 4, तो 2 3 4 पे हमें जाके ये इंक्रीमेंशन करना है। बट जब मैंने सॉर्ट करा होगा तो ये तो बिगड़ गया होगा, मैंने मान लो ये ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पे होता 5 5 2 3 होता, ठीक है। तो असल में तुम क्या बोलोगे कि मेरे को 2 3 4 इंडेक्स को देना है, नहीं, हमें देना है इस वाले को, इस वाले को, और मतलब हमें तो देना है एक्चुअल में इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग 1 2 3 4, हमें देना है 1 को, हमें देना है कितना 3, एंड 2 को हमें देना है 3, एंड हमें 4 को देना है हमें कितना 1। तब ये क्या बनेगा, मेरा फर्स्ट बन जाएगा 8, एंड देन 8, एंड देन 2, एंड देन 4, ये वाले इंडेक्स पे काम करा है मैंने, ये जो था, अब ये बन गया, राइट। 1 2 3 4 बिकेम दिस आफ्टर दिस ऑपरेशन, ठीक है, ये पहले सॉर्ट करा। पर ये वाला काम कैसे होगा, तो ये वाला काम दूसरे एरे में हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने BI बना लिया। अब मैं सॉर्ट करूंगा अपने ए को कर दो, अब तो अब किसी को भी सॉर्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। यू गॉट दैट इंडेक्सिंग, प्रीवियस वाली इंडेक्सिंग। अब तुम्हें क्या करना है, एक लूप चलाना है। फर्स्ट वाले को तो छेड़ेंगे नहीं, तो 1 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। मतलब 0 इंडेक्स को हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी होता रहे, हमें बस फर्स्ट वाले को उसका मल्टीपल बनाना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, इफ a of i is actually modulus a of i minus 1, मतलब इसका मॉडल ग्रेट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, इसका मॉडल 0 ना हो, मतलब ये एक दूसरे डिवाइड होंगे तो हम काम ही नहीं करना, अगर डिवाइड नहीं होंगे तो हमें कुछ करना है। हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट क्या करना है, वो तो सिंपल है, हमें क्या इंक्रीमेंट करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है ए ऑफ आई को, हम क्या कर देंगे प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई -1, माइनस में कितना ए ऑफ, बेसिकली ये मॉड्यूलस क्या है इसका, जो भी इसका मॉड्यूलस है वो हमें मतलब बनाना है। और मतलब जैसे इसका मॉड्यूलस यहाँ पे 1 था, 3 मॉड्यूलस 2 1 होता है। बट क्या मैं अच्छा, इसमें तो चलो 1 ही आ गया, बट जैसे ये 4 था और 5 था, तो 5 मॉड्यूलस 4 कितना होता है, 1 होता है। बट मैंने इंक्रीमेंट किससे करा, 3 से करा, क्योंकि वो पिछले मल्टीपल के पास नहीं आ सकता। 4 मॉड्यूलस 5 मॉड्यूलस 4 का मतलब क्या है, 5 मॉडल्स 4 का मतलब 1 है, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 + 1, ठीक है, 4 इंटू 1 + 1, 4 से डिवाइड होता है तो एक रिमाइंडर बचता है। तो अगर मैं एक रिमाइंडर हटा पाऊं तो वो 4 से डिविजिबल बन जाएगा, पर मैं हटा नहीं सकता, मैं बस बढ़ा सकता हूँ। तो कितने से बढ़ाऊं मैं, 3 से बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। सो सो आई नीड टू इंक्रीमेंट इट बाय 3। तो मैंने इंक्रीमेंट करा 3 से, तो दैट्स व्हाई लाइक 4 माइनस दिस मॉडुलस जो आ रहा था 4 - 1, तो अब ये ए आई हो गया, ठीक है। अब एक दिक्कत ये हो सकती है, इस केस में दिक्कत नहीं हुई, केस मैं ले लेता हूँ दूसरे वाला, ठीक है, उसमें दिक्कत होगी कि तुम्हारा बढ़ाया तुमने तुमने एलिमेंट चेंज कर दिया, तो सॉर्टेड ऑर्डर पिघल सकता है भाई, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ये था सॉर्टेड ऑर्डर 3 4 5 6 343, सबसे पहले मैंने 3 को देखा, 3 को तो छेड़ा ही नहीं, ठीक है। 4 को देखा, 4 को 3 का मल्टीपल बनाना है, मैंने 2 ऐड करा, ये हो गया मेरा 3, तो 3 ही रहा, ये मेरा 6 हो गया। ये अब अगला एलिमेंट मेरा 5 है, तो मैंने बोला था सॉर्टेड ऑर्डर में चेन लिखने चल रहा हूँ। अब ए आई इसका प्रीवियस एलिमेंट का मतलब, ठीक है, छोटा होना मतलब ये कुछ ना कुछ, जैसे 3 और 4 बड़ा था तो 3 का कुछ मतलब रिमाइंडर बच रहा था, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा था 3 4 को। अब 6 5, अब 5 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 से, पहली बात तो छोटा है भाई, यही गड़बड़ है, तो क्या करोगे, मतलब जो सॉर्टेड ऑर्डर चेंज हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग केस बना लेंगे। इफ ए ऑफ आई इज छोटा देन ए ऑफ आई -1, जो कि होना नहीं चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर की वजह से, पर जब मैंने ये ए ऑफ आई को प्लस करा तो अब ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए ऑफ आई को चेंज कर दूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, ए ऑफ आई को बस, जैसे 5 है ना, तो 5 को बस 6 कर दूंगा मैं, अब मेरे को 6 का मल्टीपल ही बनाना है ना, 6 का मल्टीपल ही तो बनाना है मेरे को, 6 × 2 क्यों बनाने की जरूरत है, 6 × 1 ही बना लो। और दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि इसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 5 में कुछ भी मतलब हमने कुछ ऐसा ऐड करा है, इसमें हमने 3 ऐड करा, मैक्सिमम हम कितना ऐड कर सकते थे, हम 4 ऐड कर सकते थे, ठीक है। और मैक्सिमम 4 ऐड कर देते, तो ये कितना बन जाता, ये 8 बन जाता, ठीक है। तो इसमें हम मैक्सिमम 4 ऐड कर सकते हैं, ये पक्का 4 से बड़ा है, तो इसमें भी हम 4 ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो वो वाला उससे बड़ा ही आएगा, मतलब ये वाला एलिमेंट सोचने की जरूरत नहीं है कि 5 और 6 कहीं ये एलिमेंट बड़ा होके इतना बड़ा ना हो जाए कि ये एलिमेंट इसको कवर अप ना कर सके। जैसे 5 तो अभी जैसे इसमें 1 बढ़ाएगा जो कि बढ़ा सकता है, क्योंकि वो 5 बढ़ा सकता है, वो एट मैक्स 10 कर सकता है अपने आप को, नीड नहीं है, तो वो 6 ही करेगा, ठीक है। क्योंकि 6 का मल्टीपल है, पर 6 × 2 नहीं कर सकता, वो अलग बात है। बट इतना तो हो जाएगा ना कि मतलब डिविजिबल बाय वो दिस तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, ए ऑफ आई को हम प्लस करा देंगे, इज इक्वल टू जो भी गैप था इन दोनों का,
ए ऑफ आई -1 और माइनस में ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ आई -1 बड़ा होता तो। दैट्स अबाउट इट यार, दैट्स अबाउट इट। बस यही है, एक सॉर्टेड ऑर्डर बना लिया। हम हर इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि अब देखो पंगा हो जाएगा कि जैसे अब ये एरे चेंज हो गया। अब एरे बिल्कुल गुड एरे बन गया, मतलब 5 6 6 को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि 6 ऑलरेडी डिविजिबल हुआ है पिछले 6 वाले से। 340 को छेड़ के 348 कर देंगे। तो मान लो ये था मेरा पुराना एरे, ये बना मेरा नया एरे, और ये भी नहीं था पुराना एरे, तो मेरा सॉर्टेड कहाँ था, ये था पुराना एरे, ठीक है, बीच में से सब उड़ा दिया मैंने। अब तुम कैसे बताओगे कि 3 को मैंने कितना दिया है, ठीक है, या मैंने 4 को कितना दिया है? अब तुम्हें क्या पता ये 6 कहाँ से आया, ये 5 से आया, 4 से आया, ठीक है। तो इसके लिए हमने यूज करी मैपिंग, मैंने यूज करी मैपिंग एंड इंट एम। तो मैपिंग में मैंने स्टोर करा कि चेंज करने से पहले एम ऑफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू कितना, सेम जितना मैंने इंक्रीमेंट करा है। उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, इंक्रीमेंट कितना करना है पता है, पर किसको इंक्रीमेंट करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब वो किसको करना था इंक्रीमेंट, वो चेंज होके अब इंक्रीमेंट हो चुका है अपने आप। तो ये स्टोर करना पड़ेगा तुम्हें, किसको इंक्रीमेंट करा था तुमने। एम ऑफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू दिस मच। ऐसा ना हो चाहिए। Yeah. So this is all I guess. Now you have to also return the count कि तुमने कितनी बार ये चलाया है, कितनी बार तुमने इंक्रीमेंट करा है। तो उसके लिए तुम एक z काउंटर मेंटेन कर सकते हो। You know what is z काउंटर? Z equal to 0, z प्लस प्लस कितनी बार ये करा, कितनी बार ये करा। ऐसा कोई केस बन नहीं सकता कि वो छोटा भी हो और मॉडुलस भी कुछ निकल के आ रहा हो, ठीक है। कि छोटा होंगे तो हम उसको बराबर कर देंगे ना उसके। तो जैसे अगर मान लो छोटा हुआ तो हमने z प्लस प्लस करा, बराबर कर दिया। तो जब बराबर हो गए तो बराबर हो गए, ये कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो हाँ, इफ सही है दोनों, ठीक है। सेइंग या फॉर, अब तुम्हें ए को देखना है और उसके हिसाब से इंक्रीमेंशन वहां पे डालना है कि अब तुम्हें बता, अब बेसिकली प्रिंट करने की बारी है। सबसे पहले तुमने सी आउट जेड करा दिया कि भाई इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन। देन अभी तुम्हारे प्रिंट करने की बारी ये है कि सी आउट जेड अंडल कि हाँ, पहले तो तुम्हें कुछ इसमें बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया, नीड आई थी नहीं, नहीं आई। अगर नीड आई थी बढ़ाने की तो बता दो भाई, इंडेक्स है ये, सी आउट करा दो i+1 ये है, और कितना बढ़ाया तुमने इसको, ठीक है, किसको, एम ऑफ ए ऑफ आई बढ़ाया हमने, है ना। दैट्स अबाउट इट आई गेस। एंडल डाल दो। Esta noche está bien. Na, 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 na. What was not declared तो हम इसको बिट्स कर देंगे /std c++ uh sorry, that I need to actually, इतनी लंबी वीडियो, ओ 23 मिनट्स, अरे यार क्या करें भाई, अब क्या पंगा है ये। आई थिंक आई नीड टू मेक इट अगेन। सॉर्ट हमने ए को करा था, बी में हम देखेंगे और बी क्या करेंगे, ठीक है। गड़बड़ कहाँ आ रही है, ऑफ आई ऑफ आई -1, a of I, a of I, and it z plus plus intensity, and this.
मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें, मतलब करा क्या था हमने। कहाँ है भाई? काफी देर में हुआ था पर इतना मुश्किल भी नहीं था। बी एन, अच्छा ओके, मैंने क्या करा, सीन यही करा क्या? अच्छा मैंने सीन भी यही करा क्या? एक सेकंड एक सेकंड। बी ऑफ आई इक्वल टू सी ए ऑफ आई, ठीक है। यार ये गड़बड़ थी, बाकी सब सही है, ठीक है। सॉर्टिंग कर दी, मैप, या बाकी सब सही है यार सच में। तो चेक कर सकते हो, ये रहे तुम्हारे पास कि 2355 का तो हमने देखा ही था, 2 को चाहिए 1, यानी 3 को चाहिए, है ना। 3 को चाहिए 1, एंड देन तुम्हारे 5 को भी 3 चाहिए, दूसरे वाले 5 को भी 3 चाहिए, इसको 0 चाहिए, 4 8 तो सही है, ठीक है। 5 तुम्हारे 2 को सेकंड इंडेक्स पे आपको 2 चाहिए, ठीक है। 4 को अपने 2 चाहिए, 3 6 बना दिया, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे आपको 5 चाहिए, वो चलो 343 को 5 देके हमने 348 बनाया, वो 6 से डिविजिबल होता है। 5 को जस्ट 1 चाहिए, तो 4 को 1, 6 तो हमारा सही है, ठीक है। और नीचे वाला भी पक्का सही है। चलो दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट, यही था। एक को सॉर्ट करा, मैप लगा दिया, रिक्वायर्ड देख लिया, उसके बाद हमने मैपिंग करी थी ताकि हम एक वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट करना है ये अपने पास स्टोर कर सके। और फिर हमने एज लाइक हमें पता था उस हिसाब से हमने यहाँ पे उस इंडेक्स पे जाके उतना इंक्रीमेंशन कर दिया। ये शो करने के लिए था, ये कैलकुलेट करने के लिए था। और तुम क्या कर सकते हो, वेक्टर में स्टोर वगैरह कर सकते हो, नीड नहीं है उसकी, मतलब ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैप से सिंपल है। ओके गाइज, बाय।